Hello students, today we are going to learn how to solve exercise number 9.6 of 11th standard maths paper 2. As we all know that this exercise is based on GST. GST stands for Goods and Service Tax. I hope I'm audible to all of you. So GST stands for Goods and Services Tax. Exercise 9.6 of chapter Commercial Mathematics is based on this concept only. Let us start solving few problems. And while solving, we'll try to understand what exactly is GST is all about. So question number 1 says that Mrs. Jan Seva Sweet Mart sold sweets of rupees 3,86,000. What is CGST and SGST he will pay if the rate of GST is 5%? So as we know that GST is actually divided into two parts. One is called as CGST and the another is called as SGST. Whatever will be the percentage of GST, half of that will go to central government. So that is central GST, and half of that will go to state government, that is state GST. So in case if we buy or sell, okay, if we buy, we pay GST, right? If we sell something, we take GST from customer. So this GST collection is 50% given to central government and 50% it is stayed back to the state government, right? So in this question, the Jan Seva Sweet Mart sold sweets of 3,86,000 and GST is given 5%. So we can easily calculate that the CGST, okay, CGST will be 2.5% because the GST is 5%. So half will be CGST, 2.5% of the total value, the total amount, okay, of which sweets are sold. So that is 3,86,000 here. So I think we can easily calculate this, that 2.5% means 2.5 upon 100 into 3,86,000. Further, you can see that 20 gets cancelled. Okay. Then here there is a decimal. So to remove this decimal, ये एक जीरो का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 25 हो जाएगा, इंटू इधर बस बचेगा 386. Correct? And this 25 into 386, you can easily multiply and get the answer. So 25 6 is 150. So 15 carry, 25 8 is 500. Sorry, what I'm saying, 25 8 is 200, 200 plus 15, 215, 21 carry, 25 3 is 75, 75 and 25 3 is 75 plus कितना carry forward था? 25, right? Please calculate this and get the answer. $21 carry हो रहा है, correct? तो 9650. 75 plus 21, it's 9650. So yes, CGST हो गया आपका
9650। अभी आपको SGST भी पूछा था, तो SGST भी क्या होगा स्टूडेंट्स? सो दैट विल बी द सेम ना, 2.5% ही होता है, और वो भी पूरे के ऊपर ही होगा, 3,86,000। तो इसको कैलकुलेट भी आई थिंक करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो, दिस इज गोइंग टू बी 9650, and this is the solution of this question, that the CGST and the SGST on the bill is 9650. Okay, so moving ahead to the next question now. Janvi Gas Agency purchased some gas cylinder for 5 lakh. Okay, so purchased price. Purchased price is rupees 5 lakh. Okay, and sold them to customer. Okay, so selling price for rupees 5,90,000. Find the amount of GST payable and the amount of ITC. 5% GST is applicable. So it is given that 5% is the GST. Okay. Now students, we all know that हम जब कभी भी कुछ परचेस करेंगे तो हम GST पे करके परचेस करेंगे, और जब हम कुछ सेल करेंगे तो हम सामने वाले कस्टमर से वो GST कलेक्ट करेंगे। जब हम परचेस करते हैं तो डेफिनेटली वो जो हमारा परचेस का अमाउंट होगा, और जब हम सेल करेंगे वो हम डेफिनेटली थोड़े ज्यादा अमाउंट का सेल करेंगे, राइट? बट GST दोनों पर सेम अप्लाई होता है। इसके वजह से जो परचेस के टाइम हम GST देंगे उसको हम बोलेंगे इनपुट टैक्स, और जब हम सेलिंग के टाइम जो GST लेते हैं कस्टमर से उसको हम बोलते हैं आउटपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स में आउटपुट टैक्स हमेशा इनपुट टैक्स से ज्यादा ही होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस के ऊपर होता है, और सेलिंग प्राइस तो परचेस प्राइस से ज्यादा ही होगा। इसके लिए जो GST पेबल का फॉर्मूला होता है वो होता है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो सबसे पहले हम लोग इसका इनपुट टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। सो योर इनपुट टैक्स विल बी, तो इनपुट टैक्स जिसको लोग ने ITC भी बोला है, जस्ट अ मिनट, आई थिंक ये इनपुट टैक्स। ओके, तो ये इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा? दैट विल बी 5% दिया है। इंपॉर्टेंट ये है कि 5% किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? तो 5% किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? परचेस प्राइस के ऊपर। सो 5% ऑफ 5 लाख, सो दैट इज 5/100 इंटू 5 लाख। 20 से 20 कैंसिल, 5/5 एंड 30 विल बी लेफ्ट। तो इसका मतलब जो इनपुट टैक्स है वो कितना है स्टूडेंट्स? 25,000। ओके, नाउ फर्दर we will calculate output tax. Okay, so output tax will also be 5%, but now this 5% will be calculated on 5,90,000 जिसका उसने, जितने का उसने सेल किया था, राइट? सो 5,90,000 के ऊपर 5% हम कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना होगा? 5/100 into 5,90,000. 20 gets cancelled, so 20 will be left. 5 9s are 45, 4 carry, 5 5s are 25 plus 4, 20.
9. So 29,500 will be its output tax. तो आप देख सकते हो इनपुट टैक्स 25,000, मतलब मैंने लेने के टाइम 25,000 जीएसटी भरा, बट उसी प्रोडक्ट को जब मैंने बेचा तो मुझे 29,500 जीएसटी मैंने कलेक्ट किया। तो ऑफ कोर्स आप इजीली बता सकते हैं कि जीएसटी पेबल कितना होगा। तो 25,000 ऑलरेडी मैंने पे किया था जब मैंने खुद परचेस किया था, 29,500 मुझे जीएसटी कलेक्ट हुआ, तो जो ऊपर का जीएसटी जो मेरे पास ही रह चुका है वो मुझे पे करना पड़ेगा। तो जीएसटी पेबल is nothing but output tax minus input tax. So that is 29,500 minus 25,000. And this is quite easy, that the GST payable is 4,500. तो यही क्वेश्चन पूछा था आपको, आईटीसी पूछा था, दैट इज इनपुट टैक्स, दैट इज 25,000, एंड जीएसटी पेबल पूछा था, सो इट इज 4,500. ओके, सो इसके जैसा एग्जैक्टली और एक क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं हम लोग. So let us go to the next question, that is question number 3. A company dealing in mobile phones purchased mobile phones worth rupees 1, 2, 3, 4, 5, 6. So if I'm not wrong, it's still 5 lakh. Yeah. So purchased price. Purchased price is rupees. Just a minute, students. Yeah. So purchase price given here is 5 lakh. And sold the same to customers at rupees 6 lakh. So this is your selling price. Okay. Now again, we have to calculate the same ITC and amount payable, and the rate of GST here is 12%. Okay, so we'll calculate the rate of GST. So first thing what we will do is the way we have done the first one, that is the input tax, right? So पहले input tax calculate करेंगे, that is 12%. Okay, so I hope everybody would have calculated the ITC, that is input tax. Input tax will be 12% given in the question. So 12% of 5 lakh, that is 12 upon 100 into 5 lakh. 20 gets cancelled. So 12 5 is a 60 and 20. 30. So rupees 60,000 is your input tax. Same way, we are going to calculate output tax. Definitely output tax will be the same, but on 6 lakh. So it will be 12 upon 100 into
6 lakhs. So 20 gets cancelled. 12 6 are 72 and then 30. So it is 72,000 and therefore GST payable. Okay. So GST payable is equal to output tax minus input tax. So which will be 72,000 minus 60,000, that will comes out to be rupees 12,000. Okay, so I hope with the help of these three examples, you all have understood very well how to calculate CGST, SGST, how to calculate the GST payable, input tax and output tax. Okay, students, thank you very much. Take care. Bye-bye.